everyone, I'm architect Tanya Singhi back with another video, another day, and with another episode of Learn with Architects. First of all, a lot of apologies for releasing another episode so late, but I have a very special episode, a very special architect who is not actually practicing architecture but is contributing a lot in the industry. Please welcome. I don't know if I should welcome him as architect Sheshgiri Rao or just Sheshgiri Rao. Call me Sesha. Okay. Welcome, sir. How are you? I'm doing good. How about you? Perfectly fine. We've actually chatted a little bit before starting the recording, but I know you have something very interesting and very knowledgeable to share. Firstly, tell me, what are you doing right now? As I have introduced already that you are not practicing architecture, but you're still contributing to this industry. So what are you basically doing right now? To put it very honestly, I'm unemployed. That's what all entrepreneurs have. Team of innovators that works specifically in segment of computer vision and artificial intelligence, wherein we are developing solutions for retail industry, we are developing solutions for construction industry, and yeah, pretty much that's it. Okay, now tell me, how did you landed up in architecture? What was your thought? What was going in your mind when you joined architecture? Okay, that's a pretty nice question. So I was in my 12th standard and confused about what I have to do, what I should do. And somehow in a party organized in NIT Raipur, I ended up in the dormitory of architecture students hostel. From there, I was taken to the Department of Architecture where I met this fantastic architect. His name was Architect D. Sanyal. He was heading Department of Architecture at NIT Raipur. And he asked me, gentlemen, you look too young to be with these old guys. I said, yes, I'm in class 12 pursuing my final years and still trying to figure out what to do. He gave me a tour across the entire building. And I was amazed to see what these guys are doing. Like they're making such nice models, they're creating things, and it's different than what my other seniors have told me that, what happens during the graduation. I was like, this is some epic shit to do and I should do this. So I asked him, what should I do? How should I get into it? And he gave me a brief introduction of how you can get into architecture. So I asked him, is it necessary for me to graduate from a college like NIT or IIT to be a great architect? He gave me example of Hafiz Contractor. He said the greatest architect in this country does not possess a degree in architecture. So it doesn't really matter. Wherever you study, learn how to create, and you'd be sorted. So unlike my other friends who were like investing a lot of their time and energy preparing for IIT, JEE and other exams, I was like, एक बार देखते हैं architecture के papers कैसे होते हैं. And when I looked at it, I was like, अरे ये तो piece of cake हो गया, I can do this. So I enjoyed my 12th. I had good friends. बहुत मस्ती काटी और उसके बाद फिर architecture का exam दिया and got into it. So yeah, that is pretty much how I came into architecture. I didn't had like much of an idea how it is done or what is it about, but a brief 30-minute session with Professor Sanyal, it changed my life, and I ended up doing this. Okay, Sanyal sir has changed a lot of lives, I guess. Yes. He has also Yes. taught me. So he taught us building services. Very, very good to know. Though we were not that lucky कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ पाते उनसे. He just taught a semester or two. So it was a great experience with him. He is indeed a great guy. Also, that you said कि dormitory में पहुंच के किसी के influence से you entered architecture. Cool. आपने 12th बहुत enjoy किया. Now, what was your experience during your graduation? How were the 5 years, 5 long years? I made a lot of friends.
I entered into a lot of troubles. This is something very interesting to start from. Yes, yes. I entered into a lot of troubles. Um, um, and education wise, like, the state of like architecture education in this country, बहुत सारे subjects की faculties नहीं थी, laboratories नहीं थे, computer lab में computer maybe barbaric थे, उनमें सारे softwares नहीं चलते थे, but all in all, कॉलेज में एक चीज अच्छी लगती थी कि प्रॉब्लम्स मिलते रहते थे उनको सॉल्व करने के लिए, इंस्पिरेशन मिलती रहती थी, कभी सीनियर्स का काम देखा, कभी जूनियर्स का काम देखा, और प्रीटी मच थर्ड ईयर तक तो कुछ ऐसे बहुत पैशनेटली नहीं कर रहे थे इसमें कि कुछ कुछ अलग करते। थर्ड ईयर तक बस मस्ती किए, दोस्तों के साथ खूब क्लासेस बंक किए, सस्पेंड हुए, ये सब करते रहे। फोर्थ ईयर में मैं ट्रेनिंग करने गया, एक आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट आशीष गुप्ता, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली and a very senior practitioner. His design firm is called First Principles Designs Private Limited. It's based out of Kalkaji, New Delhi. Or first day of my office, my life changed. And उन्होंने उस दिन से मुझे एक स्पेसिफिक तरीका सिखाया काम करने का, सोचने का और चीजें एग्जीक्यूट करने का, और तब मेरा इंटरेस्ट जगा कि नहीं, देयर इज समथिंग वी कैन डू आउट ऑफ इट। He exposed me to different design cycles. 5 महीने की ट्रेनिंग में he showed me everything that he possibly could. बैठ के सिर्फ टॉयलेट की डिटेलिंग्स नहीं करता रहा मैं, उन्होंने अलग अलग तरीके के काम दिए, कभी साइट पे भेज दिया एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट मैनेज करने को, कभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठा दिया, कभी क्लाइंट्स के पास भेज दिया कि जा धंधा लेके आ वहां से। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रमशः सिखाई। एंड उसके बाद जब कॉलेज वापस आया, लगा कि यहाँ पे तो बेवकूफ बनाया जा रहा हमें, ये तो 5% भी नहीं है जो वहां पे मैं करके आया हूँ। तो और मेरा मतलब मन सा टूट गया उस एजुकेशन सिस्टम से, एंड आई स्टार्टेड लाइक एक्सप्लोरिंग कि what else could be done, और नई चीजें सीखने लगा, कॉलेजेस और ज्यादा बंक करने लगा, और फाइनली थीसिस हमने कंप्लीट की। थीसिस कंप्लीट करने के बाद आई जॉइंड अ स्मॉल डिजाइन प्रैक्टिस आउट ऑफ ग्रेटर कैलाश इन न्यू दिल्ली, वर्क देयर फॉर सम टाइम। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, एवरीथिंग वाज डन, आई वाज सपोज्ड लाइक जस्ट एडमिशन लेने वाला था, ऑफिस में सबको मिठाइयां खिला के पेपर ड्रॉप कर दिया था। और फिर एक डिसरप्टर मिला मुझे, उसने मुझे बोला क्या करेगा एजुकेशन करके? मैंने बोला क्या करूंगा, मतलब डिग्री मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। He was like, मैंने किया है मास्टर्स इन आर्किटेक्चर, मैंने पीएचडी किया है, और इट मेक्स नो डिफरेंस। I said why? He said when you learn something on your own, you get expertise in it, you make a difference. नहीं तो ये डिग्री तो कागज का टुकड़ा है, कभी भी फाड़ के फेंक सकते हो, nobody would ask you anything. मैंने डेलिबरेटली ड्रॉप कर दिया आइडिया कि अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना है, छोड़ दिया, और फिर दूसरे कामों में लग गया। मुझे लगा कि ठीक है, लाइफ इज अ बेटर टीचर, लाइफ इज अ बेटर स्ट्रीट्स आर द बेटर स्कूल, और अलग अलग जगहों पे काम करने लगा, अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स में एक्सपेरिमेंट करने लगा, देखने लगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है, दुनिया में किस किस तरीके के काम हो रहे हैं, आर्किटेक्चर के इन एंड अराउंड कैसे कैसे काम हो रहे हैं। तो इवेंचुअली कुछ कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब किया, और रियलाइज किया कि देयर मेनी थिंग्स एन आर्किटेक्ट कैन डू बेटर देन बिल्डिंग्स। तो बस उसमें लग गया, और अराउंड दिस आई चेंज्ड अराउंड लाइक 7 jobs in 5 years. 8वीं जॉब में जब लेने गया तो मेरे रिक्रूटर ने मुझसे, एचआर ने पूछा कि यू वेरी अनस्टेबल, लाइक 5 साल में आपने 7 नौकरियां छोड़ी है, व्हाई शुड वी गिव यू द जॉब, यू लीव दिस कंपनी एनीवेज। So I told him that look, have you found anyone who got an employment so early, so fast? मिला है आपको कोई जिसको 5 साल में 7 नौकरियां मिल गई हो, आप ये छोड़िए कि मैंने छोड़ दी? He said no. I said I'm very much employable, I'm very much capable. The problem is the organizations with which I was working, they were not giving me enough in terms of satisfying my appetite for curiosity, appetite for learning, so I had to leave them. Now, it's not the question about me if I'm going to stay. It's the question about you
whether you are able to sustain me. So I've done a lot of good stuff. Even if I have worked for 3 months with an employer, look at the type of reviews they have given for me. So I'm very much up for the job. It's about you, whether you're ready for me or your culture is ready for me. And they were. That was a very good company. I worked there for 1.5 years. I learned a lot from there. Or they kept up their promise. They consistently gave me challenges that were like uh, truly extraordinary in many sense. Or karte the. That was pretty much about how I started from architecture and ended up doing all this. So this is a very interesting journey that you shared कि हाँ ठीक है आर्किटेक्चर से चालू किया फिर क्यूरियोसिटी बढ़ी फिर ये हुआ फिर वो हुआ. Right now what I think is our colleges doesn't give us such freedom to do what we want. आज आप आर्किटेक्चर के अंदर आ गए हो बट आपको एक ही चीज में फोकस किया जाता है दैट डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर अ डिजाइनर, डू नॉट फॉरगेट दैट यू आर अ डिजाइनर. आपने आर्किटेक्चर किया है एंड इफ you're not pursuing it in future, people shame you for not doing it. कि यार 5 साल आर्किटेक्चर करने के बाद तूने ये छोड़ दिया क्यों? Why are you not practicing? Why are you not designing? Why are you not in the field? So this is something. तो क्या ये आपके साथ भी हुआ? क्या लोगों ने आपको भी ये चीज बोली? हाँ. Of course, like community से boycott हो जाता था मैं, but it didn't really matter. It didn't really matter. And also, like to your point कि college में कहा जाता है कि just focus on architecture. Like I maybe agree to it because one thing at a time and that should be done well, right? अगर आप architecture ही ढंग से पढ़ लें और उसको ढंग से सीख लें, तब आप जिंदगी में और कुछ कर सकते हैं. अगर आपको आर्किटेक्चर पढ़ते समय ही आर्किटेक्चर नहीं करना है, so leave it right away. Who cares about your education anyways? Like I've changed so many jobs. To be honest, मेरे 10th का सर्टिफिकेट, मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री वो कहाँ है मुझे नहीं पता. I don't have it with me. Nobody ever asked me where you तुम्हारे आर्किटेक्चर में कितने परसेंटेज आए, 12th में कितने परसेंटेज आए. Nobody really cares. People care about who you really are, what you're capable of, right? And hence अगर आप किस चीज में capable है, you should definitely pursue it. But when you're pursuing education of design, take it very seriously. ठीक है, आपको अभी एक specific तरीके के problems दिए जा रहे हैं डिजाइन में solve करने के लिए, but you don't know how and when you're going to connect all those dots in future. Like example देता हूँ, Steve Jobs, maybe जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया उसके बाद वो कैलीग्राफी के लेसन्स लेते थे. कैलीग्राफी के दुनिया ये नहीं जानती थी उस समय. स्टीव जॉब्स ने भी नहीं सोचा था कि उनके कैलीग्राफी के लेसन्स कंप्यूटर्स में टाइपोग्राफी की का इतिहास बदल सकते हैं, राइट? सो यू नेवर नो व्हेन यू आर learning about maybe certain type of plumbing equipments, how you are going to impact the entire world with it. So do it well, learn it well. Class जाना जरूरी नहीं है. मतलब look at the architecture colleges now. जो बच्चा वहीं से पढ़ा है, बाहर जाके उसने कुछ भी नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं किया, वो तुम्हारा फैकल्टी बन के बैठा है और क्लास में आके तुम्हारी शीटें फाड़ता है. अबे तूने क्या किया अपनी जिंदगी में? like, he judging you does not make any sense. Don't take it seriously, but be the master of the craft what you're learning. तुमको नहीं मन लग रहा आर्किटेक्चर में, मत करो. म्यूजिक में लग रहा है तो be the master of it. Anything that you do it with your full compassion, full heart. एकदम उसमें लग जाओ, or then you'll make a difference. So talking about like state of education in architecture, like state of like education in anything is almost equally messed up as it is in architecture throughout the country and throughout the world. True. Right? It's about the people who make the difference, and they should realize and understand it themselves. दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर के बियॉन्ड अगर कोई कुछ करने जाता है तो कम्युनिटी से बाहर हो जाता है या दे आर ashamed. Like understand that you just pursued an education, you didn't marry. People even get divorces, right? So it's very important to understand what's good for you and what you're good at. If you're not good at architecture, you've just pursued the education. It deliberately makes no sense for you to pursue it. True. Right? It's better to be a good carpenter rather than being a bad architect, for that matter, right? So
anything that you love to do, like do it, and nobody cares. ये community इतनी छोटी सी, हर साल कितने 5,000 6,000 architects निकलते हैं, and like I had experience of working with these small companies with, like, 4 or 5 architects working out of a small tight packed rooms. और वहां पे क्या होता था कि ये जो छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स होते थे, उनका वो it used to be their country, and they were the president of their United States of me. और वहां पे वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाते थे कि अरे तुम कंप्यूटर से इधर देख रहे हो, यानी तुम्हारा फोकस इधर उधर हो रहा है. अरे यार, लाइक क्रिएटिव पीपल नीड क्रिएटिव स्पेसेस, राइट? एंड वो स्पेसेस वहां पे नहीं मिलते. सो द पॉइंट इज कि दुनिया ऐसी रहेगी, एम्प्लॉयर्स वैसे ही रहेंगे. आपको समझना है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, आप किस चीज में बेहतर हैं, और अपनी डिजाइन की एजुकेशन में जो आपने अच्छी चीजें सीखी हैं उनको कैसे अप्लाई करके अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं. So think about the impact that you can create from this knowledge, this treasure, and sky's the limit then. Of course. So if you have entered architecture, don't just think of designing a building or designing a space. Think beyond it. Think about creating an impact. Of course, I feel कि when you enter architecture, so there's a practice, there is a discipline in architecture. That if you want to design something, you have to be in that discipline, sit and think about it. You have to think very strongly about designing a space or something. So one, you learn discipline when coming into architecture. You learn how to design space. You live in that space before even having it physically. So you get so many things, you learn so many things when you enter into architecture. तो आर्किटेक्चर में आने के बाद जो आपने सीखा है उससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, नॉट जस्ट डिजाइनिंग अ स्पेस. So this is, and the make, तुम जो पूरी दुनिया है तुम्हारे आसपास, make it your canvas. Why just limit yourself to a drafting board, right? Take a pen, go out. There are a lot of problems to solve, right from urban mobility, right from people who can't see. So I'll tell you about a very close project that we are working on. It's very close to my heart. So हमने computer vision के बारे में काफी पढ़ाई की, उसमें काफी research किया, और artificial intelligence के बारे में काफी कुछ सीखा हमने, और implement किया. We're not expert, we're still learning, but like things are happening. So we were able to design a prototype of a device that could help navigate blind people on the street without any help. There are 40 million blind people across the world. Right now, we are working to cut down its cost, make it open source, so that anyone who is blind on this planet, they get some help of some sort without having anyone, standing around them. So how does it work? It has a couple of cameras that gets mounted on their body. When they walk, those cameras look at the environment and tell them कि कितने मीटर की डिस्टेंस पे पॉटहोल है, कितने मीटर की डिस्टेंस पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, क्या कहीं पे सड़क खराब है, क्या कहीं पे आगे नाला है, do you have a signal somewhere out there, so, and how far it is. And it does not tell them all this information in terms of meters, it tells them all this in terms of number of steps. Footsteps. That is how blind people see, right? So this is how my learning in design, it got implemented here, right? So when you enter architecture, you get n number of problems, and this is the way you find out the solution to that problem. जैसे आपने बोला कि ठीक है, आपको नेविगेट कर रहा है वो डिवाइस, बट आपको मीटर्स या फीट्स इंचेस में नहीं कर रहा है, वो फुटस्टेप्स की तरह कर रहा है. सो दिस इज लाइक अ गूगल मैप नैरोड डाउन इनटू अ स्मॉल स्ट्रीट और स्मॉल एरिया, जो आपको हर छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं. सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग कि ये चीजें भी होती हैं जहां हमको ये पढ़ाया जाता है कि इफ यू आर डिजाइनिंग अ स्पेस, you should keep in mind about the blind people, the handicapped people. उनके लिए वो चीज आप कैसे डिजाइन करो? Look at the design affairs in this country. America में, it's like I do a lot of projects, by the way, from United States. वहाँ पे हमने अपने
लेजर स्कैनिंग इक्विपमेंट्स बनाए हैं जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं. सो वहां से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि दे हैव दिस स्पेसिफिक बाय लॉ व्हिच इज अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट. एडीए कंप्लायंट होना चाहिए हर बिल्डिंग, हर स्ट्रीट. यानी कि you have to take care of people with disabilities. In India, we don't have any such standards. Go to any mall, go to any public space, you'll find no arrangement for people who are differently abled. They have to struggle there, Of course. right? It यहाँ पे मतलब it's made in such a manner that it tries to repulse anyone who is disabled, right? And which is not good. Which is not good. A good design should be universal. It should be it should be for everyone. And that's not the case here. खैर ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करना चाहता था बिकॉज हायरार्की में बहुत सारे लोग हैं. मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, इतने लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी और पहुंचानी भी नहीं है. सो बट ये लाइक ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था, ये हम ओपन सोर्स करना चाह रहे हैं और इसके लिए हमें बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है. द रिसर्च दैट गोज इनटू इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड हम बाकी जो काम करते हैं, जो कैमरास बना के सेल करते हैं, रिटेल स्टोर्स के साथ जो काम करते हैं, वो सबसे जो हमारी अर्निंग होती है, वी ट्राई टू यूज इट एज मच एज पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. This is a really good initiative that you guys are working on, and I really wish that you can just bring it here in India and people at least value it. The biggest thing is, if not doing anything else, at least value things, because there's a lot of hard work going behind it. So many architecture students came up to me, asked several questions कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, या हमारी ये प्रॉब्लम है, उसका क्या solution है. Out of all those questions, the very frequent question coming up is, we have entered architecture, we are performing well, but we are not that creative to design a space. हमको सब चीजें आ रही है समझ, हम सब चीजें कर सकते हैं, हमारे grades बहुत अच्छे हैं, but we're not able to design things properly as हम satisfied नहीं हो रहे उस चीज से. So this is something which I want to tell them, that okay, you're not satisfied, or maybe you're not so much interested in designing a space. You are getting so many problems. Try not to design, but solve those problems in a different sense or in different aspects. You're still in architecture industry, you're still designing something, but not spaces. I'll tell you something which is very relatable. तो जब मैं एजुकेशन परस्यू कर रहा था आर्किटेक्चर की, मेरे आसपास लड़के लाइक बहुत एस्थेटिकली साउंड बिल्डिंग्स बनाते थे, बहुत फंक्शनली साउंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो बहुत काम करते थे. मैं तो पैरेलल बार से सीधी लाइन नहीं खींच सकता था. Surviving there was quite difficult for me, but said that, I was not bad. एक मौका मिलता है आर्किटेक्चर की पूरी जर्नी में, जो कर सकते हो वो करने का, that is during your thesis. तो हाँ, उस समय सब लोग परेशान थे. कोई होटल बना रहा था, कोई मॉल बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था. बहुत परेशान था मैं कि क्या करें. मतलब कितनी बॉटल ऑफ बियर्स खत्म हो गई, लेकिन वो आइडिया नहीं स्पार्क कर रहा था. I thought maybe, let's create a problem ourselves and let's try to solve it. Or then I started with a number, which was the traffic that we have in the NCR region, particularly in Noida. कि वहाँ पे traffic कितना है और उसको कैसे solve कर सकते हैं. So I started with a number, and eventually I had to design a prototype of a building to prove my theory that इस number which is a problem, उसको solve करने के लिए ये building बनाओ, ऐसी कई सारी buildings बनाओगे तो ये problem solve हो जाएगी. And then it ended with a number which stated, like उसका gist ये था कि if this solution is executed multiple times, नोएडा में हमें सड़क तोड़ने पड़ जाएंगे और ताकि हम afforestation कर सकें. So my number started right. The jurors loved it. बट जहां पे मैं जॉब मांगने गया था, he was like, what the crap, ये मैं बिल्डर को दिखाऊंगा तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा. Sir, but this was for an impact. But he was like, नहीं ये सब चलेगा नहीं. ये बताओ तुमको सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं.
So like typical those questions started and मिल गई eventually job मुझे वहाँ पे और काम करना पड़ा कुछ दिन. But that was nice place to work. So my message to those people who are saying ki design, I'm not satisfied with the design that I am doing. First, I would say this is a very good trait. The creator should never be satisfied with his creation. So it means you are on the right path. खुद को criticize करते रहो. There would be one day when you would be, making a huge impact. Second, if you think you're not meant for it and you accidentally entered into it, try to learn as much as possible from it. That ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, क्या कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे अप्रोच करते हो. इंजीनियरिंग को टेक्निकल इंजीनियरिंग जब लोग पढ़ने जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं, प्रॉब्लम्स खोजने को नहीं कहा जाता. आर्किटेक्चर में whereas you are sent for case studies where you have to identify the problems and then make a solution in and around. Of course. Right? So आपको नहीं आता है, मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत एस्थेटिकली डिजाइन कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर में मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था कि ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग दैट इज ओनली 5% ऑफ आर्किटेक्चर, 95% उसके बियॉन्ड है. तो थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, there is a very big industry, there is a very big ecosystem you have to support and you can do it. Like कुछ मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं जो प्रॉपर्टी एडवाइजरी का काम करते हैं, रियल एस्टेट एडवाइजरी का काम करते हैं. कॉलेज में हमने नहीं सोचा था कभी कि एडवाइजरी का काम करेंगे, हमें लगता था. तो मेरा मैसेज इन लोगों को अगेन यही है कि कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग. अभी तुम्हारे हाथ में जो असाइनमेंट है, ट्राई टू मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ इट. मे बी 100% ना, तो हो सकता है कि तुम्हारा असाइनमेंट 5 अलग अलग तरीके के कलर पेन से ना लिखा हो और कोई बहुत अच्छा उसमें डायग्राम ना बनाओ. बट द कंटेंट that you have written out of a pen with a bad handwriting should convey something very very important, should solve a real problem and should look into problem from a fresh perspective and come up with a fresh solution towards it. So that is my message to them. Like it's too early to lose hope. Like अभी बहुत आगे लंबी जिंदगी है. You don't know 10 years down the line you could become the biggest hotelier of this country or the entire world. You don't know yet. So इस एजुकेशन को यूज करो, इसके साथ और काम करो. जो स्किल्स इसमें सीखे हैं उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने की कोशिश करो. देखो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और you can do wonders out of it. This is a really good advice, fresh piece of advice for I guess many people, not just architecture students but also graduates who are struggling and doing 9 to 5 job, just going to the office, drafting things and बस जिनको वो जो ऑफिस जा रहे हैं, जिनको सिर्फ टॉयलेट की डिटेल्स बनाने दी जा रही हैं, this is also a piece of advice for them कि there's a lot more things out of your office and out of that toilet detail. Okay, yes. I always believed कि आर्किटेक्चर स्कूल में जो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए काउंसलिंग सेशन होना चाहिए कि they can just sit in front of a counselor or someone and just speak their heart out कि यार आर्किटेक्चर कर तो लिया, अब इसके आगे क्या? Am I good? Am I doing it? Am I taking it further? Or I want to deviate my path. I want to go somewhere else. And now after talking to you, the feeling is more strong कि counseling is very much important into any architecture school. I disagree with you on that. Why? Counseling is not important. Introspection is important. Gautam Buddha, no one told him who he was, right? And the day he discovered it himself, it became enlightenment for him, right? So I would suggest people to question themselves, question the authority, push the envelope, start asking. No, not so, in that sense. जैसे you said, Gautam Buddha, it took him so long to realize. रियलाइजेशन जो होता है वो जब आप एकदम सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाते हो ना, तब होता है. 5 साल में बच्चा सैचुरेशन स्टेट पे नहीं पहुंचता. नहीं बहुत लंबी है जिंदगी सैचुरेशन पे पहुंचने के लिए. लेकिन but said that I support you, but I say that they should be taught how to question themselves, how to question everything in and around them.
that would imbibe that culture of defining who they want to become after a certain phase. यही कहूंगा कि खुद को देखो, औरों को देखो अपने आसपास, try to see what disruptors are doing. देखो कैसे आदमी अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंच रहा है, क्या चेंजेस वो लेके आ रहे हैं. Any solution, any product, anything, absolutely anything that exists in this world has been designed. How they have designed it is maybe they don't understand the people who designed it, but as an architect, you have learned to understand how people have designed things, so you can like technically replicate anything in this world or create something of your own, right? So looking into that aspect, I believe अभी जो कर रहे हैं, दिल खोल के करें, खुश होके करें, जितना हो सके सीखे, खूब मस्ती करें, खूब क्लास बंक करें, 2-4 सेशनल में कम नंबर आना, ईयर बैक्स लगना, 2-4 सेमेस्टर्स में बैक लगना, it doesn't matter. Like 10 years down the line, if you become a $1 billion worth of a company's founder, nobody really cares. People would laugh it out. And it would become an inspiration for people who have maybe failed. In fact, like मेरी 2 बार बैक्स लगी थी, like not year back, but like subject backs. पहली बार में तो I was like really worried कि क्या होगा, और मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ लेके गया अपने पापा के पास, कि वो दोस्त को देख के थोड़ा कम डांटे. My dad was like कि क्या हो गया, मतलब कि एक सब्जेक्ट में बैक लगी तो मुझे पूरा साल पढ़ना पड़ेगा भाई. मतलब नहीं, अगले साल को देख के फिर से पास हो जाएगा. like ठीक है, चल बैगन की सब्जी बनाया खा. So maybe this is the environment every kid or every student is expecting कि यार इतनी freedom होनी चाहिए. So I guess this is a video which will help many students कि ठीक है, you can sit, relax for a while and think yourself कि यार अब मुझे करना है या नहीं, मुझे आर्किटेक्चर करना है या आर्किटेक्चर के आगे कुछ करना है या उससे रिलेटेड. मतलब you will find many ways. Just sit and ask yourself what to do. The thing behind starting Learn with Architects was this, कि जब आप निकलते हो कॉलेज से, आपको इतनी जल्दी ये सारे एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे, पर आप एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स के एक्सपीरियंस से क्या ठीक है उन्होंने कैसा किया वो देख के शायद कुछ सीखो. 10% सीखोगे तो शायद आगे 25% खुद जाके एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे. So the motive behind doing this series was this. Thank you very much for giving us your time and giving us so much knowledgeable information. I hope कि ये बहुत सारे बच्चों के काम आए.